To be granted refugee status, you must show that your fear of persecution is well founded, meaning that there's a real basis for your fear. रेफ्यूजी तस्लीम करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो केस है, कैसे बोलना ना, केस है वो आप वो सही सच्ची और सही बेसिस पे है. ठीक है. The asylum or substantive interview is when the Home Office interviewer will ask you in detail about your reasons for claiming asylum. जो asylum है और जो substantive interview है ना, मतलब जो long interview होता है, उसमें आपको Home Office आपको बहुत तफसील से पूछेंगे कि आपको ये वजूहात क्या हैं asylum करने की. कब होगा ये इंटरव्यू? क्या होगा? So this is usually the second interview you have. So you have a first interview, a short interview that's the screening interview, and then maybe some weeks, maybe some months after that you have the big asylum substantive interview. जो पहला इंटरव्यू होता है ना स्क्रीनिंग, उसके बाद वो लॉन्ग होता है, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद. ठीक है. So in the asylum interview, you need to explain why you had to leave your country and why it's not safe to return even to another part of the country. उस इंटरव्यू में आपको ये बताना होता है कि आप अपनी मुल्क में वापस क्यों नहीं जा सकते, क्या ख़तरा है, और अपने मुल्क में या अपने मुल्क के दूसरे शहर में भी क्यों नहीं जा सकते. The interview may last several hours, many hours, and you will be asked lots of questions. You may be asked the same question several times in different ways. जो इंटरव्यू है वो कुछ घंटों तक का भी हो सकता है, ज़्यादा घंटों तक भी हो सकता है, और उसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. समटाइम्स लाइक कुछ बार वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछते हैं. It can be a very long and difficult and traumatic interview, and it could be the most important part of your asylum application. ये इंटरव्यू जो है ना बहुत मुश्किल और सदमे वाला हो सकता है, और could be the most important part of the asylum और सबसे application. अहम आपके asylum की दरख्वास्त का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसकी बेस पे फैसला होता है. In the interview, you will be asked questions about things that might be very difficult to talk about. आपके इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं जो कि बताना बहुत मुश्किल होती हैं. Be prepared for not being believed. It's common for the Home Office interviewer to explicitly say, to openly say, they do not believe you. आपको ज़हनी तौर पर ये तैयार रखना चाहिए अपने आप को कि होम ऑफिस जो है ना वो ये कह सकता है कि अब आप यकीन नहीं करता. ठीक है. जो भी आप कह रहे हो. You need to be very clear in your answers and give as much detail as possible, trying to remember to include all of the important information. आपको अपने इंटरव्यू में ना आपको कोशिश करनी चाहिए, मुमकिन होता है ना मोस्टली हाँ, कि आप क्या कहूँ कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना डिटेल से बता सको जितनी हो सकता है. ठीक है. So you might find it helpful to practice in advance of the interview, and you can use the guidance in the Right to Remain Toolkit about the questions you might be asked in the interview. आप ये हेल्पफुल हो सकती है आपकी, जबकि आप उससे पहले प्रैक्टिस कहते हैं ना उर्दू में, और टूल किट की ये जो है ना टूल किट राइट टू रिमेन की ये इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. So you might even want to do a mock interview, a practice interview with someone you trust before the real interview with the Home Office. हाँ, आप एक इंटरव्यू कर सकते हो किसी ऐसे बंदे के साथ जिस पे आप यकीन रखते हो प्रैक्टिस के लिए. You should request that your asylum interview is audio recorded, and you need to make that request in writing and more than 24 hours before the interview. आप उनसे दरख्वास्त कर सकते हो कि आपका जो इंटरव्यू है ना वो रिकॉर्डेड हो ऑडियो में, तो लेकिन आप उसके लिए रिक्वेस्ट लिख के कर सकते हो, दरख्वास्त लिख के कर सकते हो 24 घंटे पहले आपके इंटरव्यू से. कौन लिखेगा? मेरे को खुद लिखना पड़ेगा या कोई लिखेगा मेरे लिए? शी सेड
who will write it for me? Should I do it myself or? Another good question. So if you have a lawyer, a solicitor, they should write that letter for you. If they're not writing a letter for you, you can do it yourself with the help of a friend who writes English. Okay. अगर आपका वकील है तो आप वो आपके लिए लिख के दरख्वास्त कर सकता है. अगर नहीं है तो आपकी कोई दोस्त है जो आपकी हेल्प कर सकती है इंग्लिश लिखने में, वो कर सकती है आपके behalf पे. And then after the interview is over, make sure you're given a copy of the audio recording and the written transcript of the interview. जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है ना, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसकी कॉपी जो है हैंड रिटन लिखी हुई कॉपी और जो ऑडियो वो कॉपी आपको दी जाए. इंटरव्यू लेने वाला जो होगा वो औरत होगी आदमी होगा? तो she said the interview will be a female or male. That's my next point. That's a good point. Yeah. तो कहती है मेरा अगला point है. So you have the right to request a male or female interviewer and also a male or female interpreter, and you need to make that request in as far in advance as possible. ये आपका राइट है कि आप उनसे दरख्वास्त कर सकें जो इंटरव्यू मेल और फीमेल हो, और जो आपको ट्रांसलेट कर रहा है ना वो भी मेल और फीमेल हो. During the interview, if you need a break, you should ask for a break. It's your right to do that, and you shouldn't be afraid to ask for it. अगर इंटरव्यू के दौरान आपको तफरीह की ज़रूरत है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं. If you think there's a problem with interpretation during the interview, you should say there's a problem as soon as possible and ask for this to be noted on the interview record. अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे लगता ना कि वो इंटरप्रेटिंग में कोई मसला है तो आप उसे तो उनको बता सकते हैं, उनसे कह सकते हैं ताकि वो नोट कर लें. ठीक है. And you may find it helpful to talk to a friend or a neighbour immediately after the interview, maybe about how you're feeling, about whether anything went wrong. आप अपनी दोस्त से या किसी से बात कर सकते हैं कि आप उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या आप कैसा महसूस कर रहे हो. And you can write a list of things that you think went wrong or things you forgot to say in the interview. आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो. लिस्ट को क्या कहते हैं? लिस्ट बना सकते हो जो भी चीज़ें इंटरव्यू में लिख के रख सकते हो. And if you have a lawyer, then you should meet with them very soon after the interview. Tell them if anything went wrong, and they may write a statement about what went wrong, and they'll give that to the Home Office. अगर आप के पास लॉयर है ना तो आप फ़ौरन उसी से रुजू करो और उसको बताओ कि जो गलत है और वो तहरीर करें. Okay? Yeah. That's it.